Thank you so much. I think that was a very valuable introduction to the initiatives that are already taking place. During your conversation, you touched a little bit on, aspects that we need to consider, for example, power for any technology solutions to work. So sort of building on the infrastructure and digital divide, my question is for Mr. Nadeem, and how we can leverage technology to deliver educational content that bridges the digital divide, particularly where we have less access, less connectivity, and less infrastructure. Thank you, Farah. I think Wani साहब ने एक बहुत expansive view of what technology can offer दिया है, but the reality is कि हर एक के लिए वो accessible नहीं है अभी. And उसके लिए I think सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम पहले digital divide के layers को समझें. एक डिवाइड आपकी स्टार्ट वहां से होती है जहां पे हाउस होल्ड्स या बच्चों के पास किसी किस्म की भी डिवाइस का एक्सेस नहीं है. सो दे डोंट हैव अ फोन, दे डोंट हैव अ बेसिक फोन और अ स्मार्टफोन, टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, और ऐसे हाउस होल्ड्स भी हैं. और फिर इट गोज अप ऑल द वे जहां पे फोन है बट इंटरनेट नहीं है, बेसिक फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, टीवी या रेडियो है बट लैपटॉप्स या टैबलेट्स नहीं है, एंड देन ऑल द वे टू अ मच मोर nuanced form of the divide जहां पे फोन भी है या डिवाइस भी है, इंटरनेट भी है, बट द इंटरनेट कैन नॉट सपोर्ट द काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो जरूरी हैं उस तरह के गैप को ब्रिज करने के लिए. तो इस पूरी डिवाइड का स्पेक्ट्रम समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस. एंड गिवन वेयर वी आर, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि while EdTech offers a lot of solutions, it does not offer all the solutions. And so हमें अपने पाकिस्तान के context, both rural and urban, across provinces, across the categories of schools, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि spectrum जो है वो no tech से शुरू होता है. So no technology के बगैर अगर हम सोचेंगे education delivery का, तो हम automatically एक group को exclude कर रहे हैं. And then you have options for groups or segments that are connected, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और किस लेवल का एक्सेस है. तो पहली चीज फ्रॉम अ पॉलिसी तो ये कि बिकॉज वी हैव टू कंसिडर एवरीवन एज इकोसिस्टम, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ टेलरिंग विल नीड टू हैपन फॉर द नो टेक एंड द लो टेक एंड द मिड टेक एक्सेस सेगमेंट्स. उसके लिए जरूरी ये है कि अगेन फंडामेंटल्स पे वापस जाएं और जो कंटेंट है उस कंटेंट से बच्चों को क्या सीखना चाहिए उसको समझ के उसके नॉन टेक्नोलॉजी वर्जन्स बनाने जरूरी हैं. फिर हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है. वी अप्रोक्सीमेटली हैव 50% पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स. नॉन स्मार्टफोन्स के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है जिसको अभी फुली एग्जॉस्ट नहीं किया गया, एंड उस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है फॉर households or children who don't have access to smartphones and internet bandwidth. फिर ऑफलाइन सॉल्यूशंस इज अनदर रियली इंपॉर्टेंट कैटेगरी. वानी साहब ने जीबी में भी एक पायलट रन किया था जिसमें आपने सिर्फ एक दफा इंटरनेट इनेबल करना है टू डाउनलोड एंड मेक द कंटेंट अवेलेबल ऑफलाइन. एंड अगेन उस तरह के सॉल्यूशंस या इनोवेशंस हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं जहां पे कनेक्टिविटी विल बी अ चैलेंज रिमोट एरियाज में, डिस्टेंट एरियाज में. The other thing is using or leveraging community as an enabler for connectivity. And again उस तरह के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हर इंडिविजुअल बच्चे या हाउसहोल्ड में एक्सेस की जो डेफिशिएंसी है उसको कम्युनिटी लेवल पे ब्रिज करते हैं. तो गाइडेड एंड फैसिलिटेटेड सेंटर्स इन द कम्युनिटी और volunteers or arrangements that can enable children to have some supervised access through technology. So there's a range of options. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये सोचना यही है कि द चाइल्ड हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ व्हाट वी थिंक ऑफ, एंड इफ वी आर gearing towards addressing the needs of the children, then those needs will define the solutions with. ये retrofit नहीं हो सकता कि हमने solution एक conceive किया और उसको फिर हम apply करने की कोशिश करें, because that leads to an exacerbation of the digital divide in and of itself. Thank you so much. So building on those notions and of course looking at a spectrum of solutions, going from no tech, low tech, all the way to high tech. My next question is for Dr. Chugtai. Really building on that, what are the potential challenges, including relevance in integrating EdTech within our existing educational system? And how do we leverage more innovative solutions? Challenges ka pucha? Yes. So,
like I worked on the national curriculum, and it was a very difficult thing to do. सारे सूबों से, सारे areas से, उनके experts के साथ consensus लेना. On the one hand, having a sector जहाँ पे provinces में आपके very low capacity in what good quality education is, but nonetheless they had the authority to be the signatories, and on the other hand to work with the private sector to ensure that the curriculum that we sign off on in the end is a high quality curriculum, so a curriculum that works for all children. So it was a very difficult task, but I will say that the curriculum itself, it has four components. There are the standards, which is basically the national curriculum is national standards, national minimum standards of education, that every kid by grade 3 will know this much of math, by grade 7 will know this much of history, and by physics or whatever you pick. So these are the standards. But curriculum has three other core components. There are many components. There's a hidden curriculum as well. But there's standards, there's textbooks and learning materials, there's teachers, and then there's assessments. And I will say that in my work, I traveled across the country about 3 times, not just to main cities, but really tertiary cities as well, and met with a lot of stakeholders. Honestly, it was like another PhD, but a lot harder than the one I did before. But usme, I will tell you this much, that all our interventions in education are input driven. कि हमने करिकुलम बना दिया, हमने टेक्स्ट बुक्स अपग्रेड कर दी, हमने इतने टीचर्स को ट्रेन कर दिया. Nothing works in education unless you have tested a child's learning on concept-based exams and the child has demonstrated a shift in their learning level. Unless you have that evidence, everything else is input driven. Not to take away from working on inputs, but if I had to pick one focal point of all these four sort of verticals, I would say it's assessments. And assessments में आप यूं सोच सकते हैं कि बच्चा वही पढ़ता है जो इम्तिहान में आता है, टीचर भी वही पढ़ाती है जो इम्तिहान में आता है, पेरेंट भी उसी स्कूल में डालता है जहाँ पे नंबर अच्छे आते हैं. So if you can fix assessments, you can actually have a very strong pivot in how education is delivered. Now, to the theme of today's panel, how can technology be leveraged and what are the challenges in that? मैंने जब curriculum बना लिया, so I wanted to work on जब standards बना लिया on these other three verticals, and Sindh of all provinces who was against us, who had parted ways and we brought them back, was the first province to pilot this curriculum in 3 of its districts through teachers training. And I was in conversation with the exam boards of Hyderabad, Sakkar and Karachi to do their trainings on how to design and deliver concept-based exams. कॉमर्स का पेपर जो है उसके लिए 70,000 बच्चा अपेयर होता है, और उसके लिए जो लोग बैठते हैं उसको चेक करने के लिए पेपर को, वो कॉलेज के टीचर्स प्रोफेसर्स हैं जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं 3 घंटे. और अगर वो एग्जामिनर ना लंच ब्रेक ले ना बाथरूम ब्रेक ले तो फी पर्चा उसके पास 2.5 मिनट है. 2.5 मिनट. एक बच्चे की 2 साल की मेहनत वो 2.5 मिनट में असेस करता है. तो जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जो नो टेक की बात करते हैं, जब आप इक्विटी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट टैबलेट्स एंड फोन्स. Technology is how can you design assessments that in a high population developing country can deliver an equitable assessment of a student's conceptual knowledge understanding in a way that does not bias against a child's socioeconomic status. And I think there's immense potential here. Exams can be designed in a way that, you can give it a chat GPT generated answer and ask the student out of a multiple choice question, okay, what are the faults in this chat GPT generated answer to this question? Feel free to use your phone. So there's so much that can be done. And I think jitna challenging hai Pakistan
में delivering quality assessments, there is no answer but technology to leverage, to bring it towards more equitable educational delivery. Thank you. Thank you so much for that response. So, touching upon something that Mr. Nadeem and Dr. Chugtai said, one, our educational endeavors are primarily input driven, but also thinking about community as an enabler. My next question is for Ms. Jamil. How do we engage local communities and educators in, developing relevant and effective edtech content? Something that moves us again a little bit away from being input driven to being focused on student learning outcomes. Thank you very much. I think Wani साहब ने बहुत अच्छी framing की of what can be done, and when a civil servant who's gone through the works, has been a chief secretary, knows how to make his budgets fungible, make the system move, set some targets, बहुत सारा कुछ हिलजुल जाता है. और उसमें अगर वानी साहब की प्रेजेंटेशन में देखी तो उसमें न्यूट्रिशन भी थी, उसमें डिसेबिलिटी को भी देख रहे थे, इंक्लूसिव भी देख रहे थे, टीचर्स ट्रेनिंग भी थी, बहुत कुछ था उसमें. और जाहिर है उसमें एक इम्प्रेशन ये भी है कि बहुत इनपुट ड्रिवन भी है, बट जाहिर है मेजरमेंट हो रही है, उसको हम देखते हैं कि क्या है. मगर आई नो उसमें कहीं पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो आप सवाल पूछ रही हैं कि how do you involve parents? I'll talk about two things. One is something that's happening just now or just ending, which is looking at a very simple solution. Umar had spoken about where there's no tech to where there's low tech. तो अगर सेल फोन्स हैं और आप उसमें 20 मिनट्स के साउंड बाइट्स के ऊपर आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी के, और आप सिर्फ फोन बेस्ड ट्यूटरिंग कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और कोई ट्यूटर भी इन्वॉल्व है, बिकॉज इट्स नॉट द चाइल्ड अलोन, इट इज विद द कम्युनिटी इटसेल्फ. एंड वी सॉ दैट ड्यूरिंग कोविड एज वेल, क्योंकि वहां पे तो एकदम से हम व्हाट्सएप पे शुरू हो गए थे, और कहाँ जहाँ स्टोरी टेलिंग भी थी, जहाँ पे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी भी थी. And the most exciting part everywhere was in very deep rural areas was कि parents saying कि हमें पहली दफा अपने बच्चे के साथ हम learning कर रहे हैं. And during that time, because as you know, ITA does lots of assessments, we were actually asking questions of how parents are engaging with children. And what came out during the COVID study of 2022 was that children said that 70% support came from their parents. And yet, that is an elephant in the room, just like the child is. The parent or the community is also the elephant in the room. And I wanted to speak. So, the results of this EdTech or phone-based tutoring are very exciting to see कि जहाँ parental engagement होती है और जो content भी वहीं से बनाया जाता है, which is locally relevant, makes sense. It has a huge impact. But the second piece that I really wanted to talk about, because हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम major disruptions की बात कर रहे हैं. सुबह सलमान ने बात की पैम्प से, इतने बड़ी disruptions हुई, मोटरवे की डिसरप्शन हुई वगैरह वगैरह. बट इसमें भी एक बहुत नॉन लिनियर मेथड्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स और कंटेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो हमें सोचने पड़ेंगे. इस वक्त की जो लिनियरिटी है और उसमें, और आप जो देख रहे हैं एक रेवोल्यूशन है. As we talk today here, a national summit, there is also a global summit taking place, Summit of the Future. And basically, that's also looking at AI, digital, all of these disruptions. But what we are not talking about is the non-linearity of the process. And there I want to really touch upon the content that you spoke about and that is endogenous content. हमारे पास कोई समझ में नहीं आ रही. मैं थोड़े दिन पहले थरपाकर थी, नगर गई हुई थी, तो मैंने वहां पे करूंजर के पहाड़ देखे, 17 किलोमीटर पे हैं, 3.5 to 5 billion years old.
phenomenal. You know, कौन सी जगह हमारे यहाँ heritage और spices ले लें, हमारी oils ले लें, herbs ले लें, दुनिया जहान इस वक्त health systems उससे linked है, तो इतना endogenous हमारे पास content है, but there is no effort to develop that. In fact, what is happening is कि हम बाहर का content लेते हैं, उसी में कुछ हम थोड़ा मोटा कोई उसको animate कर लेते हैं, उसको digitize कर देते हैं, मगर जो हमारा अपना endogenous content है, जो बच्चा शुरू से देखता है, शायद पेट में भी देख रहा होता है, सुन रहा होता है, so वो हम content को नहीं pick कर रहे हैं. And today, more than ever, it is easier and great if we were to really curate that endogenous content from the community, from the parents, from the environment, and from every particle of this country that we can get from all the diversity, from Gilgit Baltistan to Sindh to wherever you are. तो उसके ऊपर as such हमारे यहाँ content develop नहीं होता. अलबत्ता some of the work that we are doing on creating new indigenous stories where we are not just adapting stories, but doing original content for stories, which is being written by authors over here. तो वहाँ पे कोशिश है कि हम इस तरह के endogenous content को बहुत contemporary तरीके से, उसकी ना सिर्फ कहानियाँ हो मगर उसकी digitization हो, उसमें बच्चे सीख सके, and that becomes a trigger. Storytelling is your best trigger. Alif Leila Basaras is here as well, but they storytelling is, and you all know it, Noor Academy is here, it's your best trigger in your mother tongue or in whatever tongue, but it gets to the social emotional learning bits of the child, gives the child the voice, the child the confidence that Mani Sahib was speaking about. कि अगर वो बच्चे को एक खुशी होगी और वो there's this whole notion of okay, keep the child in the center in a country which is facing poly crisis of the worst kind, in which I also say the population explosion is part of that, as is climate change, as is um, stunting, as is food insecurity, and so many other issues that we are facing. तो उसके अंदर अब आपके ने एक बच्चे को खुश भी नहीं रखना, तो फिर क्या फायदा? और उसके अंदर अगर आपने पेरेंट्स को बाहर रखना है, तो क्या फायदा? So here is an opportunity for us to bridge our social, digital, and emotional, spiritual capital with the best of the best means. I think even in this room, I've been hearing this morning, itni amazing काम हो रहा है कि there is no dearth of capacity over here to turn it around. But where is that vertical? I would, as just now Mariam was speaking about all the verticals, where is that vertical on the content? We still don't see textbooks like that. We still don't see, and I mean, Faisal and myself said in many occasions recently, कि भाई कहानी सुना दीजिए, 25 कहानियां रख लें, but that should be enough. साथ उसमें न्यूमरेसी डाल दीजिए ताकि गुफ्तगू हो सके. The child knows how to be able to manipulate, look at that concept construction, the sense of linkage at the local level, and also internalize it, and then to be able to use it digitally or on the phone or anything. So technology भी हम यही कह रहे हैं कि उसमें हम learning outcomes भी देख रहे हैं, मगर हम learning और social emotional outcomes भी देखना चाहते हैं. This is not just for the child who's young. This is the child who's K through 12, even university. सबसे बड़े messed up बच्चे ये नहीं आते हैं कि in universities and colleges who do not know how to write, but they are suffering. They're suffering, and no one is asking that. And we know the mental health challenges that we have. We're not talking about it. बल्कि अभी recently जब ये हमारी national foundational learning policy बन रही थी, उसमें कहा social emotional learning को हटा दो, time नहीं है. Social emotional learning के लिए time नहीं है. तो जो इस वक्त schools 2030 काम कर रहे हैं, which is looking at 27 domains of learning, combining both academic and non-academic, and doing it as digitally as possible. I think there are some wonderful examples, open source learning examples, because of technology that are available. Now, how do you look at those open, and that I was saying recently in a keynote in Bangkok as well, that today you have some phenomenal
open source knowledge that is becoming available. Whether you look at the Yidan Prize, you look at the Schools 2030 work, you look at the UN systems work, you look at the WISE prizes, you look at, I mean, all of this is phenomenal work, which is open to anyone to pick. I mean, there are websites today जहां से आप 2 लाख कहानियां डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जबान में कर सकते हैं. Are we doing it? Are we teaching our teachers how to do it? But more importantly, going back, where do we find the connections of the child, the parent, the teachers, and even other members who are facilitators? जैसे अभी वानी साहब हमें बता रहे थे, it takes just like it says it takes a village to raise a child, it takes learning teams to make learning happen in the most holistic sense, and where you are looking at all the disciplines in the most phenomenal way possible. And it could only happen because of the fact that we have these possibilities of digital and AI as well. Question is, how do we use them? And how do we not lose sight? Again, saying what Umar had said earlier, कि भाई पाकिस्तान के हालात तो देखें, वो जो अभी हमारी सेंसस से डेटा आया है या हमारी मिसिंग थर्ड का इंफॉर्मेशन आई है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट या तहसील बाय तहसील डेटा है, कितना बच्चा स्कूल में है, कितना नहीं है, किस हालत में है, आपके पास सेंसस से अब परफेक्ट डेटा है जैसे अभी है. अब आप कहें कि वो भी डेटा ठीक नहीं है, ये तो पाकिस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम है. किसी डेटा को कहते हैं कि डेटा ड्रिवन होना चाहिए, बट डेटा को मानना भी नहीं है. बट व्हेन यू सी के इम्यूनाइजेशन के क्या हाल है, बर्थ रजिस्ट्रेशन के क्या हाल है, स्टंटिंग के क्या हाल है, ये सब चीजें उसमें से सेंसस से नजर आ रही है. और फिर उसके बाद अगर आपके पास वो डाइवर्सिटी को हम आके बंद कर लें, क्योंकि वानी साहब को तो ये सोचना पड़ेगा आफ्टर ही ये सर कर लेंगे ये मुहिम, तो ये सोचेंगे कि अच्छा ये कैसे हम काम करेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे ये हालात हैं, इतने बड़े आउट ऑफ स्कूल और बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, उसका क्या करेंगे? सो द क्वेश्चन इज, एंड माय लास्ट पॉइंट इज, all of this business of parents, communities, giving that customization to the child doesn't happen without local level action. And Pakistan hates local level action. Wani Saab's success is exactly because इनके पास 432 या 437 या जो मर्जी इतने ही स्कूल्स थे ना. हमारे पास तो यूनियन काउंसिल से हम भागते हैं, हम स्कूल बेस्ड एक्शन से भागते हैं. तो हमारे यहाँ जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी और लोकल लेवल प्लानिंग को तरजीह नहीं देंगे, या लोकल गवर्नमेंट्स, अली चीमा का इतना काम है यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट्स की बात से जो भागते हैं सारे सियासतदान या सारे लोग, तो पाकिस्तान विल नॉट. वियतनाम की सक्सेस क्या है? विलेज लेवल प्लानिंग, यही है ना. सो विदाउट दैट हाउ विल यू गेट द voices of not just the children but also the parents and the community? And they can be lettered or unlettered, but their knowledge and wisdom is phenomenal. You know, I'm not saying every community and every parent has positive things. There are horrible things that we have in negative parenting practices, but we may be looking at positive parenting practices, but positive knowledge systems that are just going to waste in this country. Nobody is talking about them. It's time we looked at those endogenous systems, and from which some people are already looking at collecting a cache of stories in multiple languages. Zubair Torwali हमारे परेशान रहते हैं कि जबानें खत्म हो जाएंगी. ढाट की अभी धरपाकर में सिंधी नहीं बोली जाती, ढाट की बोली जाती है. उसकी जबानें हमने एक एवरी लैंग्वेज टीचर्स यू का इनिशिएटिव लिया, 5 जबानों के मुहावरे, मिसरे, कहानियां, नज़्में इकट्ठी करी ताकि लोगों को अपने इस्तिआरे ना भूल जाएं. So I just want to stop at that, but you know, it's time we also worked on the content, and the content which is coming from the dimensions of science, of stories, of heritage, of language, of numeracy, measurement, हर चीज होती है. So we are doing this initiative, which is basically called looking at herbs, spices, seeds, and oils, and to see, okay, what do they have to tell us, all the way through to mental and physical health as well. Thank you. Thank you so much.
That was a really comprehensive response, and I want to focus on a few of the key themes that came up. One, of course, is the role of the community, the parents, the teachers, the entire village, and looking at contextualizing technologies, content, and technology, which is much needed. So, I'm going to sort of pose this question to Mr. Nadeem, thinking about both the relevance and sustainability of educational technology within Pakistan's context, and thinking about the endogenous knowledge, what do you think are some of the key strategies that would ensure relevance and sustainability in our context? That's a challenging one. So building on what Bela just said, लेकिन टेक्नोलॉजी एक तो इस तरह का जो कंटेंट है उसकी अब जनरेशन में बहुत रैपिडली असिस्ट कर सकती है, and that leads to a scale that we haven't seen before. So एक तो scaling का aspect है और propagation का aspect है, that वो supply side है. और जो दूसरी side है उसकी वो adoption वाली side है, and वहाँ पे भी जो एक बहुत nuanced role technology और social platforms play कर रहे हैं, वो ये है कि लोग influence कैसे होते हैं और किस चीज़ से होते हैं बहुत drastically change हो रहा है, and so technology offers that layer. अब जहाँ तक sustainability की बात है या relevance की बात है, एक चीज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को एज एन एड ऑन अभी तक ट्रीट करते रहे हैं ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस एंड जो भी हो रहा है. अगर हमने इसको एक्चुअली सस्टेनेबल और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो हमें इसको एज ए नेसेसरी कंपोनेंट इंटीग्रेटेड इन हाउ वी डू थिंग्स करना है और उस तरह सोचना है, बजाय इसके कि एक चीज चल रही है और उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को इंटरवीन कराते रहें, बिकॉज दैट्स एसेंशियली समथिंग दैट वी डोंट हैव द मनी फॉर. एजुकेशन इज ऑलरेडी अंडरफंडेड. वानी साहब बिल्कुल राइटली साइड के पैसे जितने भी हैं उनको ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे यूज करना है और वो एक बहुत हाई प्रायोरिटी है. बट अगर आप एक बॉटम अप वर्किंग करें ऑफ पाकिस्तान के बच्चों की क्या जरूरियात हैं, दोनों जो स्कूल में हैं और जो स्कूल से बाहर हैं, तो उतने पैसे कभी हम शायद सोच में भी तालीम को एलोकेट ना कर रहे हो. एंड सो एक तरीका जो टेक्नोलॉजी की मेन स्ट्रीमिंग या उसकी रेलेवेंस को एनहांस करने का वो ये है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को कैसे री इमेजिन कर सकते हैं, जिसको ज्यादा कमर्शियल टर्म्स में हम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, जहां पे आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सिर्फ ऑटोमेट नहीं करना बट यू एक्चुअली रीडिजाइन एंड रीडिफाइन हाउ यू डूइंग थिंग्स. एंड सो एजुकेशन के केस में भी a lot of value could be created by reprioritization and reallocation. It could be created by redeploying resources. दूसरा public private partnerships की बात हुई थी पिछले उसमें. I think there's a lot of value that the private sector brings जिसको अभी भी हम at scale उतना utilize नहीं कर रहे, and so a lot of the learning curves can be shortened, और जो वो scale वाली चीज है वो वहां से आ सकती है. तीसरी चीज स्पेशली इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने काफी देखी है वो ये कि वैल्यू फॉर मनी पे इतना फोकस नहीं है कि जो $1 या ₹1 हम टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं उससे रिटर्न क्या निकलेगा, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. एंड सो आई थिंक वो डिजाइन वाली चीज पे चला जाता है कि आप कितना रोबस्टली उसको डिजाइन कर रहे हैं टू एक्चुअली जनरेट हाई वैल्यू फॉर मनी. Investment in platforms will be outdated very, very rapidly, given the pace of change. And so thinking more about what we're doing and how it's going to be scaled is really important. कि आप उस टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उससे वैल्यू फॉर मनी जनरेट कर सकें, which is much higher than what we've typically thought of in terms of inputs into education. And lastly, I think जो एक हमारे पास सबसे बड़ा asset है, which is a very, very young cohort in terms of population in Pakistan. And so unki enablement se long term development or fast tracking of things kis tarah support kar. So all the investment into education is going to lead to longer term benefits. तो वो knock on cycle है उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है in terms of doing a lot of this. But for me the biggest pick is कि जो कर रहे हैं उसको अगर हम सोच के करेंगे तो ज्यादा वैल्यू जनरेट होगी. ट्रायल एंड एरर के मार्जिन्स बहुत जरूरी होते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो डिजाइन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवेंशंस उसके ऊपर बहुत फोकस करें, ताकि जो लिमिटेड फंड्स या जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं उससे हम इम्पैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकें.
Thank you so much. That was a really comprehensive response. And then I'd like to pass it on to Dr. Chugtai. Building on that, how can universities and research institutions play a role in, in contributing to research on effective use of EdTech within our local context? Universities for ethics. I would like to reference to the previous panel, जहाँ पर बात हो रही थी कि how we have diluted. Universities are not centers of learning anymore. They're centers of credentialing. Just you buy a credential basically. And now what I'm hearing from, because I'm also at the School of Education here, I've consulted with the BNU and being from the education sector, students nowadays say कि आपने मुझे B क्यों दिया है? When I've paid my tuition and I'm spending my time, I should just get, a transcript with all A's. इससे तो बेहतर है मैं X या Y university में चले जाऊँ. I should not name the universities. जहाँ पर I basically, if you just show up and you don't do any work, you basically get the credential. You pay the money and you get the credential. And the world, the way it is changed now, credentials will not matter anymore. It's all about skills. So, what Yasir Bashir was saying earlier was that we are funneling people into universities and diluting our standards ताकि we can effectively credential all these kids and make money off of them while doing a serious disservice to the economy. So, I think that around the world post pandemic, a university is going to be an outdated concept. People, the economy is not going to go by what degree you have. Your degree will get you your first job, but after that, it's what you know and what you can do. So I think that the best thing that technology can do is for every individual to carve their own learning path of being a lifelong learner. Like 10 years from now, everyone in this room, whatever job they're doing, at least 60% of the people in this room will be doing a job that they've not heard of. Uska title nahi hai. This is actual research coming on the jobs of tomorrow. So the people who will be successful are the ones who will be able to learn new skills consistently over the course of the next 40 to 50 years of their lives. And any learning space, institution that helps a person, irrespective of what age they are in, or even an individual through a YouTube platform, if you can leverage technology to carve an individual path of learning, that I think is the future. And universities are just one pathway towards that future, which I think is going to be soon outdated, save a few, brand names in the US or over here. But generally, I think universities is an outdated concept. So perfect. All right. So thank you so much for the incredible conversation we've had. We're going to open it up for a couple of questions. And so, yes, we have more than a couple of candidates. So we'd like to go in the order of first come, first serve. I think the first hand came from this side. Yeah. Then to yes. Oh, thank you. मेरा सवाल वनी साहब के लिए. Thank you for giving us an overview of all these amazing initiatives, especially nutrition से मुतालिक, vision correction से मुतालिक जो आपने बातें की. I think आपके जो fellow panelists ने raised एक point which was related to input driven versus finding return investment. तो आपने सब चीज़ों का जिक्र किया. इसमें हम किस तरह से incorporate कर सकते हैं outputs को measure करना. So let's take another couple of questions and we'll address all of them in one go. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर मरियम से. Actually, being the part of a public sector, I've been serving public sector for more than a decade. And to use innovative methodology is a big deal in these colleges. You said that assessments patterns or styles should be changed. And recently I got the chance, not chance deliberately, they asked me to check the papers of FSC.
and that was bitter experience for me. I told them that I don't want to do that, but I had to only one bundle. um, as far as the syllabus is concerned, the content we teach to the students, don't you think that should also be revised? Because the content of English in particular, China's way to progress, I would like to give an example. We teach this to the students, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन आज भी वही हम पढ़ा रहे हैं जो शायद मेरी मदर ने पढ़ा था. सो आपको नहीं लगता कि इसको रिवाइज करना चाहिए? और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स, it I mean they have been they should have been incorporated in this course content. Thank you. Thank you. So we'll go to Manisa. नंबर वन, करेक्ट जी, बिल्कुल इनपुट ड्रिवन शायद ये लगे, लेकिन मैंने तो कहा ना कि मैंने इसकी पहले एविडेंस भी कलेक्ट की है. जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसके लिए मुझे फ्रेश सर्वे करने की जरूरत नहीं. ग्लोबली स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, इट्स एन एक्सेप्टेड प्रोग्राम. व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील? मैं फिर कुछ 4-5 लाख डॉलर का कंसल्टेंट हायर करूं, सरकार का पैसा जाहिर करूं, और फिर वो एक एविडेंस रिपोर्ट आए, फिर मैं इंप्लीमेंट करूं. बेस्ट पिक अप द बेस्ट नॉलेज विच इज अवेलेबल. सेकेंडली, एडटेक पे भी जो इनपुट ड्रिवन आप बात करें, देखें दुनिया भर में कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर अब कंप्यूटर्स और आईटी लैब्स नहीं होती? तो अगर मैंने कर दी, वो इनपुट ड्रिवन नहीं है. मैंने बेसिकली, ये नीड थी उनकी, बच्चों को, ये गरीब बच्चे, ये घर में, उमर साहब ने कहा कि ये स्कूल कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्कूल के अंदर एक कमरे में मैंने उनको 20 कंप्यूटर्स की एक लैब बना दी, इंटरनेट का एक्सेस दे दिया, और टीचर अब कंप्यूटर दे दिया जो उनको गाइड करे कि यार बच्चों, इससे क्या क्या चीजें रिट्रीव करके एकेडमिकली पढ़ना है. एक वो हो गया. तीसरा जो बात कंटेंट की है, तो बात ये है कि मुझे पता था कि सरकार का जो मेरा एग्जिस्टिंग टीचर है, उसका मोटिवेशन लेवल वो नहीं है, उसकी कैपेसिटी वो नहीं है. इट विल टेक टाइम, स्पेशली जो 50 प्लस क्रॉस कर गए हैं प्राइमरी स्कूलों में. लेकिन यंगस्टर्स हैं, मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ. लेकिन उनको ट्रेन कैसे कर सकता हूँ? कंपटीशन क्रिएट करके. कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ? तो टीच फॉर पाकिस्तान के 120 फेलोज ले लिए, नस से 75 फेलो ले लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के 150. अब टीचर्स का कंपैरिजन हो रहा है आपस में, एक दूसरे का परफॉर्मेंस का एक पीयर रिव्यू भी हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से लर्न हो रहे हैं. चौथा ये कि मैंने जब वीडियो एडिट कंटेंट ऑफलाइन, जहां कनेक्टिविटी का मसला है, वहां ऑफलाइन लेके गया हूँ. जीबी में सर मैंने पायलट नहीं किया था, 100% रोल आउट. वी शुड ऑलवेज गो फॉर होल हॉक. इस पायलट ने इस मुल्क को मरवाया कि जब भी पायलट करो, उसके बाद 2 साल उसका असेसमेंट करते रहो, तब तक नया सेक्रेटरी आ जाता है, नई गवर्नमेंट है, फिर नए सिरे से पायलट होता है. तो इट वेंट वेल. वो जो था, हमने 100% सेकेंडरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया, हायर सेकेंडरी स्कूल को, और सोलराइज किया. रिजल्ट्स बेहतर आए. मैडम बेला विजिटेड सम ऑफ द स्कूल्स इन गिलगित, एंड वी हैड लॉट ऑफ गुड. तो इनपुट की नीयत मेरी थी, है नीयत मेरी इनपुट की, लेकिन एक्चुअली एविडेंस बेस्ड था, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में तो सबसे एंड पे चीज आती है. तो मैंने तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाई, उनको थोड़ा माइंड अप्लाई किया. वो ये यूईटी के हैं, मैं भी यूईटी का हूँ. इंजीनियरिंग माइंड अप्लाई किया, एनालिटिकल माइंड अप्लाई किया. दुनिया भर में बेसिक काम करने के लिए आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है. बेसिक काम करने के लिए 3-4 पीएचडी से मशवरा करना चाहिए. वो मैंने किए. व्हेन आई वाज इन गिलगित बाल्टिस्तान, वन ऑफ माय स्टाफ ऑफिसर वाज अ पीएचडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड. एक कॉर्नेल का था, 3 लम्स के थे, 2 ना. मैंने कहा यार बेस्ट आइडियाज तुम यंगस्टर्स मुझे दो, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का डंडा होगा और सेक्रेटरी फाइनेंस के मैं पीछे होऊंगा. तो वही हुआ. दे यूज्ड टू गिव मी गुड आइडियाज, आई यूज्ड टू अडॉप्ट देम. सारी टीमों को ले आता था, और सेक्रेटरी फाइनेंस को मैंने कहा था कि एजुकेशन और आईटी पे एक पैसा भी तुमने रोका, तुम्हारी खैर नहीं. कैन यू इमेजिन, इन 1 ईयर वी ट्रिपल्ड द एजुकेशन बजट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. कि हमने कहा यार 25 डिपार्टमेंट्स को मैं ठीक नहीं कर सकता, 2-3 पिक करते हैं, उनको हम स्केल अप करते हैं. एजुकेशन इज फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर ग्रोथ, एजुकेशन इज फॉर ब्रिंगिंग पीस, एजुकेशन इज फॉर प्रॉस्पेरिटी. So that was the whole intent. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डोंट यू थिंक द करिकुलम शुड बी अपडेटेड. आई एब्सोल्युटली थिंक इट शुड बी अपडेटेड, एंड आई have PTSD after updating it, spending 3 years in government and successfully updating it. बट आपने जो बात की ना, वो वही वाली बात है कि आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, लेकिन जब तक क्लासरूम में आके वो सही तरह पढ़ाए नहीं गए और बच्चे ने वो पढ़ के इम्तिहान नहीं दिया, तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट. मैं आपको एक बात बताती हूँ. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो हमने कर लिए, वो लास्ट 2006 में अपडेट हुए थे, और वो भी मोर और लेस ऑन पेपर ही हुए थे और पब्लिक स्कूल्स के लिए हुए थे. अब जब हमने नेशनल करिकुलम 22-23 बनाया,
तो आई लर्न व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि हमने 12वीं तक कर लिया है, सबका कंसेंसस आ गया। आई लर्न कि जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एनीबडी हु डजंट डू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, द रेस्ट ऑफ एवरीबडी, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 1995 के बने हुए हैं। यानी जब मैंने मैट्रिक किया था, जो मैंने जो कुछ पढ़ा था वही अभी तक चल रहा था। तो जो आपने कहा कि मैंने वो पेपर जो चेक किए, तो फिर उसमें ये था कि कुछ टेक्निकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स भी थे, और वो इस तरह से बने हुए थे जो मेरे टेबल पर थे अप्रूवल के लिए, कि होटल मैनेजमेंट का करिकुलम है, एक वोकेशनल उसमें है टेक्निकल एजुकेशन। तो वो होटल मैनेजमेंट का क्या था, पाकिस्तान का पहला होटल 1960 में बना। और फिर आईओटी का एक सब्जेक्ट था जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आईओटी सॉफ्टवेयर एक जमात में पढ़ाई जाएगी, आईओटी हार्डवेयर अगली जमात में पढ़ाई। इनके वाईफाई राउटर जो है पहले उसकी हार्डवेयर एक साल पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे कि वो करता क्या है। तो दे वर रियली प्रॉब्लमैटिक, जस्ट थियरी बेस्ड। एंड वानी साहब तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जीबी थे, मुझे छोड़ गए मिनिस्ट्री में, और 1.5 साल मुझे विदाउट फंडिंग आई हैड टू रन दिस होल थिंग। बट बिकॉज आई बिलीव इन द सेम प्रॉब्लम दैट यू हैव, मैंने आपकी तरह पेपर नहीं चेक किए। जिस तरह वानी साहब ने कहा कि he has relied on the support of good citizens. So I wrote letters to universities across the country and I asked people, these electives need to be updated. मेरे पास पैसे कोई नहीं है। अगर 50 लोगों ने नॉमिनेशन भेजी अपनी, जब उन्हें पता लगा कि पैसे नहीं है तो 2 रह गए। लेकिन उन 2 के साथ 200 की टीम बना के हमने तकरीबन 80 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को अपडेट किया और उनको हमने नोटिफाई करवाया फेडरल में भी। और हमारा जो कोर करिकुलम है, मैंने मार्च में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आई कम बैक टू लाहौर नाउ इट्स बीइंग नोटिफाइड। पंजाब ने अब 9वीं से 12वीं में भी साइंस सब्जेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। सो education takes some time to come forth. If there was a line of people, all of whom believing that standards should be updated, I would be in the front of that line. And I think that it takes a lot of effort, but as I said before, it's not just about standards. जब तक इम्तिहान उन standards पर नहीं होंगे, तब तक आपके पेपर उसी standard के आएंगे जैसे आपने देखे। जस्ट सेकंड, मैं इनको सप्लीमेंट कर दूं ताकि हमारी बात रही ना जाए, दोबारा कौन बुलाएगा। अच्छा, वो ये था कि व्हेन आई वाज चीफ सेक्रेटरी, तो मैंने एक दिन फोन किया, मैं कहा वीसी कौन है लम्स के? उन्होंने कहा जी फलां फलां हैं, और वो आपसे जो प्रीवियस वाले थे वो इस वक्त स्कर्दू में बैठे हुए। मैं कहा स्कर्दू बैठ, उनको मैंने फोन किया, मैं कहा जी गिलगित आए, कहते नहीं हम उधर जा रहे हैं। मैं कहा सर इधर आए तो एक दफा तो आ जाए। बहरहाल जदून साहब भी थे, सारे आए, रात को मैंने इनको घेर के बिठाया, इसी तरह की मैंने कैप्टिव ऑडियंस बना के जबरदस्ती प्रेजेंटेशन दिखाई, पूरा इनको घेरा। सुबह मैं इनके साथ एक MOU साइन कर चुका था फॉर लम्स ग्रेजुएट्स टू कम टू GB टू टीच स्टूडेंट्स इन समर्स। मैंने कहा जिनका खाना मैं दूंगा, गाड़ी मैं दूंगा, फिराऊंगा मैं, चीफ सेक्रेटरी हाउस में बिल्कुल फिरेंगे, जो पैम्पर कर सकते इनको क्या। हमारे कैन यू इमेजिन, जब वो बच्चों को मैथ्स डिजाइन थिंकिंग की क्लासेस कराते थे, टीचर्स भी हमारे साथ बैठते थे, तो वो उनकी लर्निंग हुई। तो बात ये है कि मैडम इस तरह घेरते हैं, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये घेरना किसको कहते हैं। तो मैंने कभी किसी की मेहनत की, किसी की तरला किया। कैन यू इमेजिन, बाबर अली साहब ने अपने घर बुलाया, वो किसी चक्कर में थे, गपशप ये वो बूट में थे ना, ही इज अ लेजेंड। मैं उनसे भी 50 लाख रुपए ले गया अपने GB के स्कूलों के लिए। तो बात ये है कि पैशन के साथ अपना मुकदमा लड़े, कमिटमेंट के साथ लड़के, 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते, लेकिन बात आगे बढ़नी चाहिए। थिंग्स विल मूव। कंटेंट की बात है, लास्ट बात में कर दूं कि एक इंडियन एम्बेसडर आया स्टाफ कॉलेज में, आई वाज डूइंग माय स्टाफ कॉलेज। हमने कहा वो पाक इंडिया रिलेशंस पे लेक्चर देगा, उसने लेक्चर दिया इंडिया एंड इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड। बात यह है कि यू शुड टीच किड्स टू नो अबाउट द एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबल। इसलिए मैंने कहा चलो अब एक्सटेंडेड नेबरहुड उसने कि हम इनको यूनिवर्स पे लेके जाते हैं। यू हैव टू थिंक बिग। हर चीज किताब से नहीं आएगी, क्लास में से बातों से भी आएगी, कॉन्वर्सेशन से भी आएगी, को करिकुलर एक्टिविटी से भी आएगी, समर कैंप से भी आएगी, टेक बूट कैंप से भी आएगी, चेस से भी आएगी। सो वी हैव टू ऐड एवरीथिंग इनटू द सिस्टम। कोई चीज बच्चा 3 चीजों से सीख जाएगा, कोई 2 चीजों से सीख जाएगा। तो ओवरलोड रोड मेमोराइजेशन बना करे, लेकिन खूबसूरत करे। आखिरी बात, अगेन आखिरी बात, कि स्कूलों को खूबसूरत इतना करे कि बच्चे वहां आए। पाकिस्तान में गुर्बत है, 2 कमरों के घर में टूटे में रहता है। जब वो स्कूल है, स्कूल भी टूटा हुआ, उसका क्या दिल लगेगा?
तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था इस्लामाबाद में कि स्कूलों को इतना कलरफुल करो, इतना प्लेफुल करो कि वो आए उसका वापस जाने का दिल ना करे. तो you have to add glamour into education also. Until and unless you make your schools glamorous to attract kids to come to visit, और क्या हमने वापस नहीं जाना, ये तो बड़ा जबरदस्त है. इसमें स्पोर्ट्स रूम भी है, इसमें माइंड स्पोर्ट्स रूम भी है, फिर लैब भी अच्छी है, खाना भी मिल रहा है, किताबें भी हैं, बूट कैंप्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, वो क्यों जाएगा? तो अगेन मैं कहता हूँ 360 डिग्रीज करें, टेक्नोलॉजी अगेन पार्ट ऑफ इट. जिस बच्चे ने सारी जिंदगी फोन नहीं देखा, आपने उसको कंप्यूटर और क्रोम बुक्स दे दिए, तुम बैठ के इसमें करो. तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट्स किड्स आल्सो टू लर्न. तो वो कई बच्चे ऐसे थे, हम गरीब जब होते थे तो हमने कहा जिसके घर में पहली दफा वाटर कूलर आया तो वो समझता था इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का पानी होता है. तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए जब वो कंटेंट लर्न करेगा, कंटेंट तो नॉर्मल है लेकिन वो जिस तरीके से अनरेवल हो रहा है उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी. ये मेरी शाम गरीबान थी, हमने कहा. All right. Thank you so much, Dr. Farah, and to all of our panelists for such a wonderful conversation.